Okay, so we are live again, and yeah, go live. I'll do. Okay, so we are live again, everyone. How are you? Those of you all have joined here. Let me just see who have joined. All right, I'll. Oh, no problem. Just a minute. Okay. Yeah. Okay. So hi there, everyone. Hello. I hope all of you all have joined, and those who are interested in modular arithmetic, kindly ask your friends also if they are interested to join. And yeah, oh, why? Fine. So please ask your friends also if they are interested to join, and they can join and start studying, or they at least they can subscribe to the channel and start. Now, for modular arithmetic, like I would like to be very clear on this topic that see this topic has lot of use of calculator also if you are allowed in your examination, or you need to do lot of speed math. Okay, so you means you need to be good at multiplications at least. Okay, multiplication, add, subtract, and all that. Now this topic is largely coming from a background called number theory, and it is there this topic very useful. Okay, and see the background of this topic is using number theory, cryptography, other stuff. But I'll start now to the coming to the main point. We will see how the notations are to be handled. Now, see the base of this. Okay, the base of all the thing of this topic is सबसे पहला चीज आपको डिवीजन अल्गोरिथम मालूम होना चाहिए. अगर ये मालूम नहीं है डिवीजन अल्गोरिथम, तो आपको क्या है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो डिवीजन अल्गोरिदम सिंपल है, जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. तो क्या होता है उसमें, हम कोई भी नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं, बराबर. तो मान लीजिए कि ये कोई एक नंबर है बी, उसको हम लोगों ने डिवाइड करा ए से, तो हम लोगों को एक कोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा. तो ये हमारा डिवीजन अल्गोरिथम था. तो यहाँ पर हम लोगों को ये था कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बड़ा होता है, स्ट्रिक्टली बड़ा है तो अच्छी बात है, इक्वल ए रहेगा. और हम लोगों के पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है जनरली. रिमाइंडर स्टार्ट होगा, वो होगा या तो ज़ीरो होगा रिमाइंडर, बराबर, या तो रिमाइंडर इज ज़ीरो, वन, टू, अप टू जो हमारा डिवाइडेड नंबर है वहाँ तक ही जाता है, उससे बड़ा नहीं ले हो सकता है, बराबर. तो वो उससे एक कम रहता है, n माइनस वन तक रहता है. मतलब यहाँ पर रहेगा आपका अगर आप थ्री से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो उसका जो भी आपका ये रहेगा वो a माइनस वन तक ही आएगा. ओके, तो ये बेसिक अल्गोरिदम है, दिस इज द बेस. ओके, तो अभी इसी चीज को मैथमेटिक्स में थोड़ा और अलग तरीके से वो लोग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये नोटेशन है तो अच्छी बात है, पर इसी को वो लोगों ने थोड़ा ट्विस्ट करके कैसे बनाया देखो. वो लोगों ने करा कि अच्छा, तो ये है बी माइनस आर कर सकते हैं इसको, और ए इंटू क्यू. ओके, तो अब उन्होंने क्या करा, अच्छी बात है, तो उन्होंने अब इसी में से मॉड्यूलो नोटेशन डेवलप किया. तो मॉड्यूलो नोटेशन क्या है, मॉड्यूलो नोटेशन, तो मॉड्यूलो नोटेशन इन्होंने बनाया कि अब यही चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे कि लिखने के लिए अब हम लिखेंगे B इज इक्विवेलेंट टू R मॉड A.
ये उन्होंने बना दिया। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड ए, ये नोटेशन इन्होंने बनाया। इसका एक वर्जन बनता है यहीं से, और एक वर्जन है, हम लोग इसको ज़्यादा मतलब समझ में आ जाता है, पर हम लोग ज़्यादा इसमें ये झगड़ा नहीं करते इस पे। फिलहाल ये ऐसे भी होता है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड क्यू भी कर सकते हैं हम लोग इस टाइम पे। ओके, ये तो अब यहाँ से मॉड्यूलो नोटेशन बनता है। तो अभी मॉड्यूलो नोटेशन का मतलब क्या है, तो पहले ये एक आप इसमें समझो। तो अगर आप कभी भी लिखते हो, आगे मैं लेके जा रहा हूँ इसमें, दैट इफ A is congruent to B mod n, तो इसका मतलब क्या है। अभी आप इसमें ज़्यादा सोचे नहीं कि सर उधर A था B था, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, खाली आप अभी प्लेन नोटेशन अंडरस्टैंडिंग समझिए। तो नोटेशनली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A माइनस बी इज completely divisible by n। a माइनस बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय n, इसका मतलब क्या हुआ, n मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं, n डिवाइड्स, ये एक स्टैंडिंग लाइन डालते हैं, स्टैंडिंग लाइन डाल के लिखते a माइनस बी, इसको रीड करेंगे, ये स्टैंडिंग लाइन को रीड एज डिवाइड्स। ओके, डिवाइड्स। ओके, ये ऐसा मीनिंग है। तो अभी इसका मीनिंग क्या है, n डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर k, ओके, एक कोई तो इंटीजर है k, सच दैट सच दैट nk इज a माइनस b, ये इसका मीनिंग है। आपको समझ में आया। तो ये नोटेशन है। इफ यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नोटेशन एंड देन यू जंप इनटू सॉल्विंग, you will be clear about what is happening where। Okay, this is the whole meaning of this thing. Now there is one very nice equivalence over here। equivalence मतलब आपने जो लोग भी आप स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दूसरे जगह पर एक ये पढ़ ही लिया होगा मॉड्यूलो करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और अपने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन करके कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये एक बता देता हूँ, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, अगर आप जब लिखते हो तो इसका मतलब ये भी होता है, दिस इज ऑल्सो सेम एज, ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n भी लिखो तो भी बात सेम है, इसमें देर इज नो डिफरेंस ओवर ईयर। ओके, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मॉड का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने लिखा कि यहाँ पे लेट्स से कोई एक छोटा नंबर लेते हैं, n को हम लेते हैं 7, और a लेते हैं हम लोगों को 10 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो अगर मुझे b की वैल्यू ढूंढनी है, तो देयरफॉर व्हाट इज b, तो अगर मुझे यहाँ पर a मॉड b करना है या जो भी निकालना है, तो मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, और यहाँ पर मॉड लगाना है, राइट, 7b मॉड 10। तो मतलब ये कितना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर a लिया है, राइट, 10 लेते हैं, 10 और b मॉड 7। तो दिस इज एज गुड एज टू से मुझे ढूंढना है 10 मॉड 7। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना है। तो आपको ये 10 का रिमाइंडर निकालना है जब 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर तो 3 आता है,
बराबर। अभी इसका मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब हो गया कि अब जब भी आप 10 के बारे में बात करोगे, 7 से जुड़ा हुआ रहेगा जब मॉड्यूलो, तो 10 विल बिहेव लाइक 3। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, 10 अभी से 3 की तरह बिहेव करेगा। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल यहाँ लिया हूँ। तो अभी जैसे अगर मुझे 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये मैं अगर अब मुझे 100 mod 7 करना है, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, वो है 9। बराबर। अब ये 9 भी, जो भी नंबर 7 से बड़ा होगा उससे आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 तो 3 की तरह बिहेव कर रहा था। बराबर। तो आपने उसको 100 के यहाँ पर उसको 3 की तरह बिहेव करवा दिया। बराबर ना? तो यहाँ पर ये अब 100 है। तो अब 10 का स्क्वायर 100 था, पर 10 is behaving like 3, तो that is as good as to say 3 square। तो 3 स्क्वायर हो गया 9 mod 7। बराबर। अब ये 9 mod 7 हो जाएगा आपके लिए 2। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 100 का जब आप 7 से डिवीजन करोगे तो आपको 2 मिलेगा आंसर रिमाइंडर में। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है जो आपको हेल्प करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं 4 mod 5। ओके, तो 4 mod 5 क्या होता है? 4 mod 5 तो 4 ही होता है। पर अगर यहाँ पर हम एक देखें कि नेगेटिव नंबर भी पावरफुल होता है इसमें। तो 4 और 5 मॉड करने के लिए जब आप जाओगे, तो यहाँ पर -1 होता है। क्योंकि अगर आप 4 नेगेटिव एक ले लो, ओके, तो 4 इज मॉड 5। तो 4 कितना कम है 5 से? -1। ओके, अभी आप देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, तो मॉड यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपको बोलेंगे कि ये तो 1 हो जाता है आपका। बराबर। पर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। तो 16 मॉड 5 1 ही तो होता है। बराबर ना? मॉड 5 मतलब क्या? मॉड मतलब रिमाइंडर निकालना है। बराबर। तो रिमाइंडर 16 का मॉड 5 से 1 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक पावरफुल टेक्निक है। नंबर्स का स्ट्रेंथ आपको पता चलता है जब आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे मॉड्यूलो देखोगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि नेगेटिव नंबर अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा पड़ता है यहाँ पर। ओके, नेगेटिव नंबर हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे कि ले लीजिए, यहाँ पर हम लेते 6। 6 mod 7 करो, तो 6 mod 7 आपका अगेन ले लीजिए। 6 के बदले यहाँ पे ले लीजिए 5 mod 7। 5 mod 7 तो बेसिकली -2 होता है। बराबर। 5 mod 7 -2 है। अभी 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। बराबर। तो ये 25 mod 7। तो अब क्या होगा? 25 का 7 से अगर आप रिमाइंडर निकालोगे, तो आपको आंसर 4 मिलेगा। बराबर। 4 मिलेगा। तो क्या ये 4 -2 का स्क्वायर नहीं है? -2 का स्क्वायर ही करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये नेगेटिव नंबर है ना, आपका जो बड़ा बड़ा नंबर्स होगा उसको कोलैप्स करने में बहुत मदद करेगा। दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू ब्रेक डाउन और रिड्यूस द नंबर्स इनटू स्मॉलर नंबर्स वेरी फास्ट। ओके, सो लेट मी हेल्प यू आउट ऑल विद दिस। ये तो ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आपको ऐसी चीज़ें बार बार मिलती रहेगी, और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे और सिंपल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हाँ,
तो एक उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर एक मॉड्यूलर अरिथमेटिक में एक दो कुछ रिजल्ट्स है वो मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको आसान रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, एक जो आता है यूक्लिड एल्गोरिथम आता है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि क्या होता है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये किसी भी नंबर का जीसीडी फाइंड करने में मदद करता है। मैं इसमें स्टेटमेंट और वो सब नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको हेल्प करता हूँ कि ये क्या करवाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हाँ, तो दिस हेल्प्स one to find the GCD of two numbers। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, जैसे फाइंड, हम लोग लेते हैं जीसीडी ऑफ 24 एंड 16 या 36, इन दोनों का जीसीडी लेते हैं। अगर हम करने के लिए जाएंगे तो कैसे करना है, तो ये हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है ये। तो 36 लेंगे और 24, तो हम इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 36 बड़ा नंबर है, 24 छोटा है, तो 24 से 36 को डिवाइड करो तो 24 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, या हमारे पास रिमाइंडर आएगा 12। बराबर, ये हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा। हेलो, आपको समझ में आ रहा है ये? ओके। अब ये 24 जो है उसको हम ये नया रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करो तो आपका 2 आंसर आ गया। तो यहाँ से 12 इंटू 2 24 होता है, और फाइनल रिमाइंडर 0 है। तो ये हम लोगों को आंसर मिल गया यहाँ पर कि हम लोगों को ये 0 आया। बराबर। तो अब जीसीडी कौन है यहाँ पर, जीसीडी है इनका, ये जो 0 के प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर आता है वो हमारा जीसीडी होता है। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो जीसीडी ऑफ 24 एंड 36 इज 12। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमको 12 मिल गया है यहाँ पर। ओके। तो ये इस तरीके से होता है। ले, एक और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, अलग एक नंबर का। मान लीजिए लेते हैं जीसीडी 12 लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं 30 से 38 नहीं, रुको, यहाँ पे लेते हैं 64 लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, तो 64 बड़ा नंबर है और 12 छोटा नंबर है, तो 12 को 64 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 12 फाइजा 60 होता है। ओके। और प्लस हम लोगों के पास 4 आ जाएगा। बराबर। अब 4 नया रिमाइंडर है हमारा, और 12, तो ये 12 को और 4 यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 इंटू 3 हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 0 आ गया। तो 0 के पहले जो है वो हमारा जीसीडी होता है। समझ में आया आपको? जो लोग ऑनलाइन है, आपको ये समझ में आ गया कि 0 के पहले हमारा लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 के पहले जो नंबर आएगा रिमाइंडर वो हमारा जीसीडी है। तो जीसीडी ऑफ 12 और 64, देखिए हम लोगों को 4 मिल गया।
ओके, तो जैसे ये एक बहुत अच्छा पार्ट है, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि इसी से दिस इज फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी कॉल दिस होल मॉड्यूलर अरिथमेटिक का ये फाउंडेशन है। इसके बिना करना मतलब नहीं है, तो नहीं कर सकते और क्या करेंगे, है ना। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छा, तो अब हम यहाँ पर ये जीसीडी किए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस भी होते हैं, तो जीसीडी आपको समझ में आया होगा आई होप। चलो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ और एक बड़ा एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आंसर एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा एक, जैसे जीसीडी ऑफ 237 और 81, इसका जीसीडी निकालना है। कैसे करेंगे अब, तो हम लोग को क्या करना है, 237 और ये 81, इसका डिवीजन करो पहले। तो 237 डिवाइड बाय 81 कितना होता है, ये आप करिए। तो आपको यहाँ पर टाइम्स 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर 75 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप 81 को 75 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलता है देखो। तो 81 को 75 से डिवाइड करो तो ये तो 1 ही मिलेगा, बराबर यहाँ पर। और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब ये 75 को 6 से डिवाइड करो तो कितना मिलता है, तो यहाँ पर तो आपको 12 मिल जाएगा, बराबर। और यहाँ पर आपको मिलेगा 3। अब ये जो 6 है उसको आप 3 से डिवाइड करो तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 0 आया। तो ये जो 0 आया उसके पहले स्टेप में जो रिमाइंडर है, ओके, ये रिमाइंडर आपका जीसीडी है। तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 237 एंड 81 इज 3। आपको ये समझ में आया। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग बताइए, आपको क्या ये समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड दिस। ठीक, तो ये 237 से 81 को हम लोगों ने डिवाइड करा, तो हम लोगों को जीसीडी के बारे में पता चला कि ये 3 है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि we can express the GCD always in the terms of its two such numbers such that it is a linear combination of some numbers, and these numbers are not unique. So let me help you out how to get that done. So see here there is a process, I'll do side by side over here with another color pen. Okay, see this. Okay, so what happens here,
Okay. So here this 75 can be written as 2, or I'll go in the reverse way. This 3 can be written as, the GCD 3 can be written as from this step. Okay. From this step, I can write it as 75 minus 6 into 12. It is possible. Now, the 6 which we see can be written as, it can be written as 81 minus 75 into 12, right? So now I'll do a bit simplification here. So 75 minus 81 into 12 and plus 75 into 12. Now this 75 and this is becoming 75 into 13 minus 81 into 12. This is how this is working. Now the 75 which is there, see, we are done with this equation, right? And now this 75 wala equation, so the last equation is the 3 equation we took, that is done. Now we go for the 75 equation. So for the 75 one, how will you get it? It is 237 minus 81 times 2 into 13 minus 81 times 12. Now on reversing all this thing, we get this. So what is this? 237 into 13 minus 81 into 26 minus 81 into 12, ये ऐसे करना है, बराबर? तो 237 को 13 से आपने मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रहने दो, उसको सॉल्व मत करो। और अब माइनस 81 और ये 26 और 12 कितना हो गया, ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 38। तो आप देखिए, 3 के लिए हम लोगों को दो ऐसे नंबर्स मिल गए कि अब आई कैन ऑलवेज राइट द GCD in this format, some numbers. So can you see? So 3 is a linear combination of 237 and 81 with some arbitrary numbers. Okay. So what happens? So the result is like this in Euclid algorithm. Due to Euclid algorithm, the result says that this numbers we can always, if you have GCD of two numbers a comma b as d, then this d can always be expressed as some am plus bn. I can always express where m and n are integers, where m and n are some integers, and this m and n are not unique. Okay, so this is what we understand. This is what there is one result regarding GCD. So this is very important result according to me. It helps you to find many relationships between the numbers. Okay, so please understand this logic over here. Okay, now having said this, this result will guide you further also. I will explain further concepts when it comes. So let me give you some important results regarding the uh, what we call this one as just a minute, I have my notes over here. Yeah.
Yeah. So regarding congruence equation, this will help us because see this thing is going to help us in division and further Euler and other equations when we see. So having done this, what happens with GCD? Let us, we saw this is the main result, the first easiest result regarding GCD. Now, let me help you. So, first regarding congruence equation. So, what is congruence equation? We just had begin with A congruent to B mod n. Congruence relations or congruence mod n. That is what is modular arithmetic about all. Okay. So, first thing, if you write A is congruent to B mod n, okay, the most important understanding is about this is it means that n divides A minus B. This is the most important thing. Or further understanding of this is that is there exists n can be written as k n times k is A minus B for some k belonging to integers. Okay. Now, second thing, if I have A is congruent to 0 mod n, the meaning of this is 0 mod n if you have, then n divides A. That is a meaning over here. Alright. Now, let us see some important things like here. So, suppose if I write this example here, I'll give you that if you have 3 is uh, 7 mod 4. Alright, 3 is 7 mod 4, and also I'll also try to hint you over here that this can be even, this is also same as um, 3 instead of 7 you can even take minus 1 congruent to 7 mod 4. Okay, because 3 is one short 4, right? My one short it is less one, so that is very important. Now, if you understand this also very clearly, phi is congruent to how much will be this? Let's say I have here one example with me, 43 mod 6. Okay, now how does this work? So let me help you out. Let us understand this. So 6 6 are 36, right? 6 7 is 42 and 6 8 is 48. So you already have here it is 48. So um, if you see this number 43 alone, if you want to just see 43 alone, let's consider this and understand what it is. So what I'll be considering here, I'm not considering the minus sign, and just 43 mod 6 I want to understand how much it is talking about. So 43 is how many times, what is the remainder it will leave when it is given to me. So we are just attacking 43, not minus 43 right now. So 43 when you are attacking, 6 6 are 36, 6 7 are 42, right? So it is going to be minus 6 6 are 36, 6 7 are is 42, yes. So you have here it is 1 mod 6, all right? And that one, now if you consider to multiply minus sign, if you consider to multiply minus sign to 43, so minus 43 mod 6, all right, is going to give you is equivalent to minus 1 mod 6, and that is same as 5 mod 6, because who is less
1, then 6, 5. I hope you understand this. You see, this is a very, very powerful technique that guides you to collapse the number. So you did not get scared that how it is working. Okay. Now, some important results regarding congruences that help you to understand the congruence equations, they are this. So first is, if you have something which is A congruent to B mod n, all right, for all x in z, you can have this thing then. Then A plus x is B plus x mod n, all right, and then there is AX is equal to BX mod n. This is what is very important. Then there is, you can do this only when, now further result is there, if AX is BX mod n, then um, yeah, one thing is there, and one more thing, and GCD GCD of n and x is 1, then you have, then I can say A is congruent to B mod n. This is very important. Another result is something again useful. If you have two congruences, A is congruent to B mod n, and you have C congruent to D mod n. Alright, so you have here A plus C is B plus D mod n, and AC is equals to BD mod n. This is how it works in mathematics. Okay, so there are these two equations that come out of the congruences which are there. Now let us see how to handle certain congruences and congruence questions. Okay, so yeah, one more result I'll give you, that if you have, if A, and this is an important result which I would like to quote here. So if A is congruent to B mod n1, okay, and A is congruent to B mod n2 also, and if GCD of n1 comma n2 is 1, okay, then A is congruent to B mod n1 n2. This is what is very important result, and it will guide you further. Okay, so let us see some small questions that help you to understand. So the first and the easiest question is, find the smallest positive integer modulo 8 to which 3 square, 3 cube, 3 raised to 4, 3 raised to 10 is congruent. Congruent. Okay.
So how do we get this? Again, it's going to be very easy. We don't have to worry at all. So the number is here we have to multiply is 3 squared, 3 cube, 3 raised to 4 and 3 raised to 10 modulo 8 they are asking, right? So we already know that, see here, so we already know in our mind that 3 square is 1. 3 square is 9, okay, and 9 modulo 8 is congruent to 1. So 9 is behaving like 1. Alright. So any further powers of 2 are going to behave like that. So let us just see how many, what is the total of the powers. So total of the power is 5 and 19. Alright. Here it is 5 plus 4 is 19, right? 19, 3 raised to 19 modulo 8 is being asked. So what I can do, I can write here 3 raised to 19 I can write as 3 raised to yeah 18 plus 1 and mod 8. This can be further written like this way, that it is 3 raised to 18 into 3 mod 8. Okay, now this will be what? Here it's going to be 3 raised to 2 to the power 9 into 3 mod 8, right? That is how you have 18, 2 into 9. Now 3 square we have already said that it is going to behave like 1, okay? This is where we wrote here. In this equation we wrote. So now what we will do is this is 1 to the power 9 into 3 mod 8, and 1 raised to 9 is 1 obviously, and that multiplied to 3 is mod 8. This is how we get it. So we need not at all get scared that what will happen when. Alright, so this is how this is going to work, and this is how it is. So very easy questions here. Question another I'll take up. Let's say find the smallest positive integer which is uh, which is which 10 raised to 515 modulo 7, which is um, oh right, the question would be like this: to which 10 modulo 7 is congruent. Now how do we calculate this? Again, it's a big thing. For 10 raised to 5 and 5 is going to be a very huge number, but then when you are going modulo 7 it's very easy to handle. Let us see. So 10, when you have here 10 mod 7, first you consider, so that is 3. So now all what we have to do is every time we attack 10, we are going to ask for 3. 3 is obviously going to behave like 10 is going to behave like 3 now. So 10 raised to 515 mod 7 is going to behave like 3 to the power 515.
Okay, so this is 3 to the power 515, and yep, you have to do modulo of this now, modulo 7. Okay, so we have got this. Now let us see how other ways we can tackle the problem. Now see, we first see powers of 3. So 3 power 1 is 3, 3 square is 9, and if I do mod 7, this will behave like 2. Okay, this is going to behave like 2. So what I will do now, I will divide 5 and 5 in the powers of that, so I will be able to get that. Okay, now further, see, this is 2. Okay, now what I see it further, 3, uh yeah, now fun part begins here. 3 raised to 2 is 9, which as mod 7 when we do, it becomes 2. Now I know if I do 3 raised to 2 whole cube, it will become 9 cube mod 7, which is has to be 8, right? Which has to be 2 cube, okay? Which is congruent to 2 cube. Now 2 cube mod 7 is again going to be how much? It's going to be 1. So in short, I have derived here one very important understanding, that 3 raised to 6 mod 7 is going to behave like 1. Alright, so do you get that 3 raised to 6 is going to behave like 1? Having said that, let me help you out further. So 3 raised to 6 is going to behave like 1. Now we have deciphered a good number of things, so we check for 5 and 5 how it will work. So we will just do a small division with 6. So 5 and 5 divided by 6 gives me 85, right? So 515 divided by 6, you get 85. Okay, and here you are left with 5. Okay, so therefore when you are going to do 3 raised to 515, I can write this 3 raised to 6 into 85 plus 5. So this is 3 raised to 6 into 85 into 3 raised to 5 modulo, um, we are going 7, right? Okay, so we'll write in the next step. So therefore when we have 3 raised to 515 mod of 7, when you do, it is going to give you 3 raised to 6 into 85 into 3 raised to 5 mod 7. Now we already know that 3 raised to 6 raised to 85 under mod 7 behaves like 1, right? We have deciphered 3 raised to 6 is behaving like 1 over here. Okay, so this is going to be 1 raised to 85. And now 3 raised to 5, let us see how does it behave. 3 raised to 5, when you are trying to attack, how is it going to behave? Let us see.
So this can be treated as 3 square into 3 square into 3 mod 7. 3 square behaved like 2, right? So this is 2 and 2, and 3 is behaving like 3 itself. So now this is easy to collapse. So 4 3s are 12, and this final answer is 12 into 3 is 12 mod 7, which is basically 5 mod 7 is your answer. So 10 raised to 5, 1 5 is going to behave mod 7 is going to behave like 5 mod 7. I hope you get this. Okay. Even this is a very good technique for all those who are struggling to understand the whole process of modular arithmetic. Um, so if you get good hands-on training of this, you will be able to understand how to manage the calculation. So all these things help you to understand whether we can do the calculations easily or not. Okay, so having done these two kind of questions for your understanding, let us go further and see how to handle this congruence equations and other kind of things. Okay, now we first before even jumping into the topic, let me help you over here that we will need some more important thing. One thing is called Euler phi function or totient function. So let me help you what it is. So there is one important function, Euler phi function or Euler phi function. It is sometimes also called as totient function. Now what does it do basically? It says if p is a prime number, then phi of p then phi of p is p minus 1. Okay, this is what it gives you. This is what the Euler phi function helps you with. Further, there is one important thing regarding it. It helps you, it gives you, gives us the number of positive integers which are co-prime with p and are less than p. This is what it helps you to understand. Okay, so now if you take a bit general version of this, so in general, um, in general, if I have a number n,
or rather, before even taking you to general, there is one property I'll tell you here, that phi of m comma n is phi m comma phi n, that is GCD of, if GCD of m and n is 1. So it means essentially phi is multiplicative. If you want to write, it is here, phi is multiplicative. Okay. Mhm. Okay, so this is one very important thing. Now, see, every number in mathematics, a number can be written in the powers of the prime. So, if n is written as p1 power, say k1, p2 power k2, p3 power k3, and dot dot so on up to p pr power kr. Okay, if there are so many prime numbers and all prime where p1, p2 and pr are distinct prime numbers, then I can calculate phi n. Phi n in that case is going to be phi of p1 power k1, phi of p2 power k2, dot 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 up to phi of pr power kr. Okay, this is how it is going to be. And further, here it is going to give you like this way: p to 1 to the power k1 minus p1 to the power k1 minus 1. Ah. Then there is p2 power k2 minus p2 to the power k2 minus 1, and so on up to pr to the power kr minus pr to the power kr minus 1. This is the formula for finding the phi n of any number. This is very very important. It helps you a lot. Okay, so let us see how to handle them. Yeah, now comes one very important theorem called Euler's theorem. Euler's theorem. Okay, so if you have GCD of a number a and n as 1, okay, then a to the power phi n is 1 mod n. This is 1 mod n you have here. And this Euler theorem is very very useful for finding inverses. Okay, there is one more like this. You have Fermat's little theorem, another very important and a generalized or a much better version which helps you. So for, you have Fermat's little theorem. Okay,
So Fermat's little theorem is here. If we have a prime p, if p is a prime and p does not divide a, then for a belonging to z, okay, a an integer a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. 1 mod p, this is the thing. Okay, so this is very useful again, and this helps a large number of students to calculate various other results. Okay, so yeah, this will help you. Now if you want inverses from here, then if this is a result is there, then from Fermat's little theorem you can also get a very nice thing here. It if I want to calculate a raised to minus 1, then it would become a raised to p minus 2 over here and a raised to minus 1 mod p, right? I want to calculate inverse of a number, then this can help you, or even the above theorem, Euler's theorem, can help you. So let us see how it does it work in all these cases, and then we will have a bit a deeper insight of it. So let us see how does it go about. So like um suppose you are asked a question is there, 2 raised to 81 mod 41, how much it is, calculate. How do we calculate this? So now you need to use some basic understanding. We know that is 41 is prime, okay, is prime, and 41 obviously does not divide 2. So we are in a position to apply Fermat's little theorem, right? So by Fermat's little theorem, how much does it give you? It will give you 2 to the power 40, right? 2 to the power 40 is equivalent to 1 mod 41. Alright, so it means 2 raised to 40 whole square is congruent to 1 square mod 41, which is indirectly, which is 1 only, right? Not a big deal. So 2 raised to 80 is this. So 2 raised to 81, meaning I have 80 here and 2 being multiplied on both the sides. I have this. So 2 raised to 81, and this is 2 mod 41. Simple. That's how you use Fermat's little theorem to get your answer. Okay. So a kind of a good easy way out around to understand how the things are boiling down. Okay. So let us see and calculate what is the power. Let's say find
5 5 5 to the power 661 modulo 7. Now, what is it? We can't go doing around the calculator, but then you use the techniques which are taught. So 7 is obviously prime, 7 is prime, and by even checking the divisibility, we will come to know that 7 does not divide 555, obviously. So when you have this, so you are in a position to use Fermat's little theorem. So by Fermat's little theorem, you are allowing the whole thing to go like 5, yeah. So you will have 555 power 7 minus 1 is 1 mod 7, right? Okay, so 555 whole raised to 6 is congruent to 1 mod 7. Now, what does this become? This will be, mm, we will take it to the power 110. 555 whole raised to 110 is 1 to the power 110. This is the beauty of modular arithmetic, that you take as many as power as long as there is a mod. There is a nice way to collapse your number as large as it appear. So 555660 we have got, and here it is going to be uh, the one, right? Here it is one only, nothing more. Okay, so I like this topic a lot because it helps you to, make your brain active. You generally do not deal with large numbers when you are doing calculus. It's all smoothing of the functions and everything that you are talking about. But when you deal with number theory, you actually deal with numbers that you have never ever seen. So, and that's where you feel, wow, this is something intriguing, and sometimes even very very interesting, because those numbers reveal very different behavior at times. So now 5 5, yeah, so we wanted it to be multiplied one more time. So now I'll multiply 6 6 here 661 we want. So that is basically we are multiplying 555 mod 7 we are going. All right, now let us see how much mod 7 we can go over here. So this is 5 multiplied by 111 mod 7. All right, so 111 itself is going to be, if you take 111 over here, so 111 is how much mod 7? Yeah, so when you divide it by 7, you will get 7 times 15 plus 6. Okay, so you have your remainder coming as 6 mod 7. So 6 5 is 30, 30 mod 7, and that's going to be 2 mod 7, right? So 5 power 661 gives you 2 mod 7 as your answer. I hope this was clear to all of you and you are able to understand the nuances of working for this. Okay. Now let me help you out with few more questions based upon Euler theorem, and that will guide you to do it better.
Okay, let us see how to handle this. So, Euler theorem question it is for use Euler theorem. So, let us see 52 to the power 480 is 1 mod, prove it. We are asked to prove it is 1 mod 105. Very strange and nice. Let us see how do we handle it. So Euler theorem had one very nice thing in its mind, that GCD of the number a and n should be 1. Uh, So it is very evident 52 and 105, um, here. Let us see if there is any GCD. So first, if we can find the GCD here, we have to just see whether any common is there or not. So the GCD of here, let us actually calculate. So it's going to be 105 and 52. So 52 52 is, wow, great. It's obviously 1 year. 52 into 2, oh, you land up on 1. That's over. So there's no need further to calculate, and you have your answer coming as 1. GCD is 1. Okay, because if you have the next one 52 and 1 over here, so it's going to be just 52 times and then the 0 over here, so this one is your GCD. So you have 52 and 105 GCD as 1. Now let us calculate the torsion function for 105. So now torsion function of 105, how do we calculate it? Let me help you out. So this torsion function, we first factorize, do the prime factorization of 105. So if you do that prime factorization, I see it's going to be 5 into 3 into 7. Okay, 7 threes are 21 and 21 and 105. So this, because all of these are having GCD as 1, okay, they are distinct primes, so I can write them, it is multiplicative 3 and phi of 7. So phi p, okay, it is 1, so here it is going to be 5 minus 1, 3 minus 1 and 7 minus 1. So this is going to be 4, this is going to be 2, and this is going to be 6. 8 6 is 48. Therefore 52 raised to 48, right? So 52 raised to Euler torsion function 105 modulo um, 105 is 1. So this is 52 to the power 48 mod 105 is 1. It means now that 52 raised to 48 whole raised to 10, if I do, is going to be modulo 105 1 to the power 10. So that's 1 alone. Okay, this is how this is done. So 480 mod 105. This is how it is working around. So I hope you have understood the nuances of finding in numbers using Euler theorem and Fermat's little theorem. Okay, so this is how it is done for
Euler and Fermat's little theorem. Now, in the next class, when I meet you guys, I will be elaborating on congruence equations. Okay, I hope you are able to understand this uh, things and you liked it. Please hit like button and share it with your friends, those who find it useful. And yeah, we will deal with it in the later classes. Okay, thank you. I hope this benefits you in your examination and you score great marks. Thank you. Any doubt if you have, you can post it in your comment sections or in the comment you can let me know. Okay, um, कोई है तो बता दीजिए अगर कोई डाउट हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं अब. Alright, so I'll stop here. Thank you for joining in and all the best for your examinations. Thank you.